Okay, so in previous class or in previous video, we was discussing about the male reproductive system. We was talking about male reproductive system of humans. हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे थे एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट the different parts of male reproductive system. We have talked about its location also. It is located in the lower pelvic region, in the pelvic cavity, and it has 4 parts. Can anyone tell me the 4 part of male reproductive system? The 4 part of male reproductive system. कल की क्लास में हमने पढ़े थे. The testes. Very good. शाबाश. External genitalia. External genitalia. Very good. And the 2 remaining parts are accessory ducts and the accessory glands. So there are 4 parts in human male reproductive system, and the first part is the primary sex organ of male, that is called testis. Testes are the primary sex organ, or you can say primary reproductive organ of human male, or they can be also considered as gonad. एंड जैसे ही टेस्टिस को हम गोनाड का डेजिग्नेशन देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि टेस्टिस गोनाड्स है, तो यहीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दैट मींस द टेस्टिस प्रोड्यूस द गैमीट्स. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस द गैमीट्स, द मेल गैमीट दैट आर कॉल्ड स्पर्म. क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन जो गैमीट प्रोड्यूस करता है उसी को गोनाड का डेजिग्नेशन दिया जाता है. सो दे आर द मेल गोनाड, सो दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट. In previous class we have discussed about the location of testis. हम बात कर चुके हैं कि testis कहाँ located होते हैं. In today's class we are going to start with the structure of testis. Is it okay? We are going to discuss about the structure of testis. So if you will see the section of testis, अगर एक testis का पूरा sagittal section काट दिया जाए तो you will see that testis is a flat oval body. What it is? It is a flat oval body which has a length around 4 to 5 centimeters and width is around 2 to 3 centimeters. So testis is a flat oval body which is around 4 to 5 centimeter long and 2 to 3 centimeter in width. Testis is so important for us. Testis में हमारे gametes produce होते हैं, और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक organism actually survive कर रहा है किस लिए? To reproduce. So testis are very important organ of our body, and because they are important, so they are protected. इनके protection के लिए एक चीज तो ये they are contained inside the scrotum, but in addition to this, the testis are covered outside by a connective tissue fibrous capsule. Testis बाहर से किससे covered है? Connective tissue के fibrous capsule से cover है. When I say this capsule or this protective covering is made up of fibrous connective tissue, that means it contains the connective tissue that also contain the protein fiber. और इस capsule को, इस protective covering को किस नाम से जानते हैं? It is called tunica albuginea. So protective covering, the capsule that protects the testis is called tunica albuginea. Then inside this is the cavity of testis. ये testis के अंदर क्या है? This is the cavity of testis. This connective tissue invade inside the cavity of testis. ये connective tissue ही testis की cavity के अंदर invade कर जाता है, and then divides the cavity of testis into many compartments. Testis की cavity को किस में बांट देता है? It divides the cavity of testis into many compartments. So now you could see the testis cavity is divided into many compartments, and each compartment is called testicular lobule. What it is called? Testicular lobule. Is it clear? Yes, sir. In a testis, around 250 testicular lobules could be there. एक testis में around 250 testicular lobules
हो सकते हैं. ओके, नाउ इनसाइड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, फॉर सपोज वी आर कंसीडरिंग सिर्फ एक की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सो इनसाइड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल 2 or 3 highly convoluted tubules are present. 2 या 3 बहुत ज्यादा मुड़े हुए tubules present होते हैं. And these tubules are called seminiferous tubules. What they are called? They are called seminiferous tubule. So each testicular lobule contains 2 or 3 highly convoluted, that means highly coiled seminiferous tubules. Is it clear? Yes, sir. Now, आपको पता है आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन द सेल्स, स्पेस बिटवीन द टिश्यूज, स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम. व्हाट इट इज कॉल्ड? इंटरस्टिशियम. तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, इनके बीच में भी स्पेस है. सो दैट स्पेस विल आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियम. उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियम बोलेंगे. And in this interstitium there are cells are present. Interstitium में कुछ cells present होती हैं. And these cells, because they are present in interstitium, thus they are called interstitial cells. क्या बोलते हैं इनको? Interstitial cells. Is it clear? Yes, sir. And because they are discovered by a scientist named as Leydig, so they are also called Leydig's cells. इनको हम किस नाम से जानते हैं? One name is interstitial cells and the another name is Leydig cells. Is it clear? Yes. Now, this is the overall organization of testis. ये testis का overall organization है. Now these seminiferous tubules that we talked about, these are the actual site of spermatogenesis. यही वो जगह है जहां पे एक्चुअल में spermatogenesis की प्रोसेस होती है. Why I am saying this? If I cut the section of this seminiferous tubule from here, अगर इस छोटा सा सेक्शन में seminiferous tubule को काट दूं, तो देखो इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा. This is the wall of seminiferous tubule. ये seminiferous tubule की wall है. In the wall of seminiferous tubule, you will see the epithelium will be there, and that epithelium contain 2 type of cells. जो seminiferous tubule है, उसकी wall की जो epithelium है, उसमें 2 तरह की cells है. This epithelium of seminiferous tubule is called germinal epithelium of testis. इसको क्या बोलते हैं? Germinal epithelium of testis. And you could see it has 2 type of cells. The cells that are larger in number, वो cells जो ज्यादा संख्या में present हैं, and a type of cell which are fewer in number. These cells which are smaller in size and larger in number, they are called spermatogonia. क्या बोलते हैं इनको? Spermatogonias. That means these are the cells that will undergo a process called spermatogenesis, और फिर इनसे sperms बनते हैं by the process of meiosis. Is it clear? And the second type of cells are called Sertoli cells. What they are called? Sertoli cells. And Sertoli cells are responsible to provide the nourishment to the developing sperms. Actually ये जो germinal epithelium है testis की बेटा, इसकी cells divide करेंगी by meiosis, और उससे क्या बनेंगे? Sperms बनेंगे. That means sperms कहाँ बनेंगे? Inside the seminiferous tubule. Seminiferous tubule के अंदर sperms बनेंगे. तो उन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं?
दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स. नाउ बेटा अब एक चीज ध्यान में रखो, हालांकि हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ स्टेजेस होती है. आपके पास एक डिप्लॉयड सेल होती है विच इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. देन इट अंडरगोज द मियोसिस फर्स्ट एंड फर्स्टली इट मल्टीप्लाइज इन नंबर्स में मल्टीप्लाई करके इट कन्वर्ट्स इनटू many diploid cells that are called primary spermatocyte. Then primary spermatocyte will divide by meiosis first and produce the haploid secondary spermatocyte. Now secondary spermatocyte will divide by meiosis second and produce the haploid spermatids, and then these spermatid transforms into the sperms. So you could see the spermatogenesis occurs in a successive manner. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस एक क्रम से होने वाली प्रोसेस है जिसमें एक स्पर्मेटोगोनिया कई स्टेजेस से होकर गुजरता है. Spermatogonia converts into primary spermatocyte, then primary spermatocyte divides to produce secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte divides to produce spermatids, and then spermatids transforms into the sperms. Is it clear? Is this clear? Yes, sir. Now ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका अगर आप सेक्शन काटोगे तो इसकी जो वॉल की लेयर है उसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की ये स्टेजेस उसी सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी. दैट मींस ये जो पहली लेयर है सेल्स की, इट रिप्रेजेंट्स द स्पर्मेटोगोनिया. देन देयर विल बी अनदर लेयर ऑफ सेल that will represents you the primary spermatocytes. Then another layer of cell which may contain the dividing cells, and this represents the secondary spermatocytes. Then there will be a layer that contain the spermatids, and in the cavity of seminiferous tubule you will see the freely floating sperms. और जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने हेड को, अगर आप एक स्पर्म की स्ट्रक्चर देखोगे तो दो बेसिक पार्ट देखने को मिलेंगे, हेड एंड टेल. सो व्हेन द स्पर्म्स गेट फॉर्म्स, so they embed their head inside the Sertoli cells. अपना हेड कहाँ लगा देते हैं, into the Sertoli cells, and in this way they get the nourishment. इस तरह से उन्हें क्या मिलता है, nourishment. So if you will cut the section of a seminiferous tubule, अगर आप एक seminiferous tubule का section काट देंगे बेटा, तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफरेंट स्टेजेस सेम सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी. जैसे the first layer represents the spermatogonia, the second layer will represent the primary spermatocyte, the third layer will represent the secondary spermatocyte, the fourth layer will represent the spermatid, and in the cavity you will see the freely floating sperms. क्या देखने को मिलेंगे आपको, freely floating sperms देखने को मिलेंगे. Is it clear? सर ये लेयर है ना? Yes, the different cell layer of the wall of seminiferous tubule will represent the different stages of sperm development during spermatogenesis in the same sequence. Spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and then in the cavity the sperms are flowing. Is it clear? Yes, sir. Then sperm mature होने के बाद अपने head embed कर देते हैं into the Sertoli cells.